have a very exciting part of our today's session, and I introduced Dr. Rashmi Bawa. She's a physiotherapist, and she's a lady who's full of energy and who can make us exercise and become fit absolutely. And she is, her energy is very infectious, like they say. So over to you, Dr. Rashmi Bawa. Thank you so much for the beautiful words, ma'am. Good evening, everybody. And I'm traveling right now, so I'll just be speaking from the car. I'm sorry for the background and all, but I'll try to make it as interactive as is possible. It is so beautiful to talk to seniors because जो चीजें हमें mention करनी होती हैं, all of you have so beautifully already mentioned that. Like ma'am was talking about all the rotations of the shoulders and everything. And yes, for the frozen shoulder, one of the best exercises is when we go ahead with the wall climbing. Dr. Taru was mentioning वो fingers के साथ which we go forward. That's such a beautiful exercise, and making the rotations with along the wall. All those are wonderful exercises. I have compiled a set of exercises for today. So are we all ready to have some fun? Yeah. Yes, that's it. Ma'am was giving beautiful quotes. Thank you so much for the energy here. Divya ma'am was actually speaking such beautiful quotes. I have a very small quote here. Motion is the new lotion. We all need to get forward and we all need to move. Like abhi Dr. Shashi ne bola, it is no way now कि after 50 or 60 only we need to start. We need to start after 40 because everything, sarcopenia or osteoporosis का जो remnants हैं, जो after effects हैं, जो भी देखने को मिलते हैं, these start very early, rather much earlier than we thought. And this leads to a cascade of problems: weaker muscular contractions, longer reaction time, compromised balance. So again, you all know it leads to accelerated muscle mass. So the solution that we offer is always a combination of resistance exercises and balance training. अब balance से होता क्या है? हमें तो लगता है कि we all are walking straight, so we have a good balance. But when we talk about improving balance exercises, we talk about improving the coordination and strength, which of course enhances stability, mobility, flexibility. So let us start working on that. As females, all through our lives, we are very much used to walking on tight ropes. Right now, we'll be walking on a tight rope for ourselves. Tightrope exercises or the taping exercises. We'll just have a tape onto the ground, कोई भी हमारे घर का area, wherein we can take 15 steps in a straight line. We should have a broad tape of around, say, 3 inches onto that area, and imagine that is our tightrope. Dr. Rashmi, yeah, we want to do the exercises. You make us do them. ठीक है? हम लोग we are ready. हाँ. So first exercise. Okay, ma'am. So sweet of you. Thank you, ma'am. I would have loved to do all the exercises had I been in a different setting right now. I'm so sorry for that. आप हमारे को कमांड दीजिए और हम करते हैं हम लोग. ठीक है? So nice of you, ma'am. Everybody ready? She's telling us. Let us keep the seats and let us walk on our tight ropes. बहुत tight वाली rope हम अच्छे से चल इसके ऊपर. So we have our tight rope onto the floor and let us walk onto that rope. Right foot forward and now the left heel touching the right toe. Let us repeat it with the alternate leg and go forward. Dr. Taru, thank you so much. I can see you are walking so beautifully there. Thank you. Yes. So let us walk on our tight ropes forward and backward. 5 steps forward, 5 steps backward. Can't see anything, yes. Please. We can't see anything. Ma'am, I am actually not able to perform, but everybody is here is helping me out with the practice. मैम एक लाइन सीधे कहीं ना कोई तो जो बीच में टाइल्स लगी होती है उनका जॉइंट होगा ना लाइन, उस लाइन पे चल पड़ो. हाँ जी मैम, वो भी एक टेप का बहुत अच्छा अल्टरनेटिव हो जाएगा. कोई भी एक हम पैरामीटर ले लें. मतलब इससे आपको ना वो करनी आ जाएगी रैंप वॉक. यस मैम, दैट्स द एडेड बेनिफिट. And इसके साथ ही ना मैम, we all are used to carrying such heavy loads onto our shoulders.
सो हम सोचते हैं कि हमने अपने हेड के ऊपर एक बड़ा सा बीन बैग उठाया हुआ है. सो लेट अस हैव दैट बीन बैग ऑन टू आवर हेड्स नाउ. मैम बैलेंस करना पड़ेगा दोनों हाथों से ऊपर. इसमें अपना शोल्डर फ्लेक्शन, एबडक्शन सब कुछ अच्छे से हो जाएगा. सो वी हैव दैट बीन बैग. या दिव्या मैम, ब्यूटीफुल देयर. दैट्स ब्यूटीफुल. ये बहुत लाइट है दिव्या, थोड़ा भारी उठाओ, 2-3 रखो उसके ऊपर. हाँ जी मैम, ये वाली बात भी सही है. वील हैव 3 to 4 देयर. और मैम बड़ा वाला बीन बैग इमेजिन कर लेते हैं ना सिर्फ, सो दैट वुड हेल्प अस. सो वी हैव आवर बीन बैग्स and let us walk on our tight rope with the bean bag lifted. Yes, good. और मैम शैतान तो हम लोग थोड़े हैं ही, तो हम अपनी लाइन से थोड़ा हिलेंगे भी. Let us go ahead and deviate. Let us go in for a zig and a zag. Yes, और bean bag हिलना नहीं चाहिए मैम. Yes, that is so beautiful. मैम ये तो हम लोगों के साथ जब हम वो ग्रेज एनाटॉमी जब हमारी वो देते हैं रैगिंग, सिर पे ग्रेज एनाटॉमी रखवा के और चला दो लाइन में, हिलना नहीं चाहिए. Everybody please join. Everybody please join the fun. Yes, Rashmi. Yes, मैम it is always fun exercising. और अगर मजा नहीं आए तो एक्सरसाइज करने का फायदा ही नहीं होता है ना मैम. So again, walking on tight ropes with heavy loads on our head, and then again, heavy load उठाया तो उतारना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Let us throw the load off. सामने सीधा एक बास्केट इमेजिन करते हैं. Yes, and we throw the loads off. Wonderful. बीन बैग के बदले क्या उठा सकते हैं? मैम ये सिर्फ इमेजिन करना चाहिए. बीन बैग है. आप कुछ मत उठाओ, इमेजिन कर लो, बहुत सारा मैम इट वाज जस्ट एन इमेजिनेशन कि दोनों हाथ ऊपर कर हम लोग कितनी अच्छी तरह से एक सारा सामान हमने उठा रखा है. और अब इसके साथ जो हमारे दिमाग के अंदर के लोड है उसको भी फेंको बाहर. एग्जैक्टली मैम, थैंक यू सो मच. इतना लाइट हो गया यहाँ से भी, यहाँ से. अरे फेंक कर आओ दिव्या, बैठो. अब नेक्स्ट तो बताओ ना रश्मि. अब हम उठ गए तो उठ गए. अभी नेक्स्ट है मैम. यस मैम, थैंक यू मैम. हमारी सीनियर्स में ना हम लोग सब में ना बड़ी अच्छी क्वालिटीज होती हैं. वी ऑलवेज रॉक ईच अदर्स बोट्स ऑल्सो. अपनी तो हम करते ही हैं. सो लेट अस रॉक ईच अदर्स बोट्स. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? वील बी स्टैंडिंग स्ट्रेट विद द स्पाइन, नेक, हेड इन अ बिल्कुल स्ट्रेट वाली लाइन. एंड वी कैन ऑलवेज हैव अ सपोर्ट फ्रॉम द एनी ऑफ द चेयर्स अलोंग विद. Up, putting all our body weight onto the left leg, we'll do a hip knee flexion of the right. बिल्कुल 90 डिग्री हमारा हिप भी जो है फ्लेक्स हो जाना चाहिए, 90 डिग्री ही हमारा नी भी फ्लेक्स हो जाना चाहिए. एंड देन जैसे मैम किसी बोट के ऊपर चढ़ने वाले होते हैं, अगर हमने उसको पुश करना है थोड़ा सा तो हम लेग से पुश करते हैं ना. दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू रॉक द अदर बोट. लेट अस रॉक द बोट. लेट अस स्टैंड विद द स्पाइन स्ट्रेट. And again, all the body weight onto the Taru ma'am right foot. Okay, onto the right foot with the hip knee flexed of the left one. Ma'am आप knee extension कर दीजिए. Knee extension, left knee का extension ma'am. सीधा कर दीजिए इसको जैसे किसी चीज को किक मार रहे होते हैं. Yes, exactly. This is how we would go forward 5 times with each leg. Single leg weight bearing भी हो जाएगा, साथ ही साथ में बैलेंसिंग भी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा. Yes, this is so beautiful. Great. Taru, you're doing so well. Yes, and I'm loving it. पहली बार है I'm sitting and everybody is exercising for me. Thank you so much. Okay, and we all love flamingos, don't we? They're such beautiful birds. And now we'll all be flamingos here. Yes, बढ़िया वाले अच्छी तरह से fly करते हुए flamingos, है ना? इसके लिए again what we would be doing is जो हमने अभी किया, more so the same one, we'll be standing on one leg and lift the other leg up, and then we would be moving the other leg from side to side. जो हम hand से pendulum बनाते हैं, वही pendulum हम अब खड़े होके अपने hip joint से बनाएंगे. Exactly. Move from forward and backward, move from side to side. And please take some support if you want. सपोर्ट तो चाहिए. हाँ जी मैम, इनिशियली चाहिए होगी, 1-2 दिन बाद नहीं चाहिए होगी मैम. दिस इज वेरी इजी. प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले.
नहीं मैम, इतनी सारी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा. So these are very basic exercises which would लेकिन I help तो us. say कि always पकड़ के करो, we don't want to fall down. Exactly, ma'am. Always better to take precautions. That is always there. While we are at it, we'll do one very important exercise now, which is the triplanar toe taps. इसमें क्या करना होता है? While we are standing, we imagine कि हमारा एक, जैसे हम क्लॉक को इमेजिन करते हैं, हम उसके हैंड्स के बिल्कुल सेंटर में खड़े हुए हैं, फलक्रम पर खड़े हुए हैं. So one of our legs, example the right leg, is the minutes wala hand. So first of all, we'll take the right leg forward, 12 वाली position पर, आगे जाकर toe tap करेंगे. We'll come back to the neutral position. Yes, Divya ma'am, thank you. Then we'll go to the 3 o'clock. We'll come back to the tap it there and come back to the neutral position. We'll come backwards, 6 o'clock. और फिर से neutral position. So it is a 1, 2 and 3 kind of a thing. Again, this 9 o'clock भी होता है साथ में. हाँ जी मैम, वो तो सारी क्लॉक 1 से लेकर 12 तक हो जाएंगे मैम. So again, नहीं, सेम लेग से ले, आगे से 9 पे ले जाओ. सेम लेग 9 पे ले जाओ. हाँ, यस. सही बात है मैम. This is exactly आगे ma'am. जाओगे. Yeah. Fine. मैम ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, हमें थोड़ा सा धीरे धीरे कर we'll grade it up and go forward with all the things. So this is how. इसमें ही करा था ना एक बार पहले. मैम हम लोगों ने एक फिजिकल वाला भी किया था सेशन, उसमें भी we had done this particular exercise and it was Dr. Divya, I think it was about an airbag that we did that. Yeah. Yeah. अच्छा वो बताइए ना, जैसे कि हमारे लेग्स में हमें मसल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि बैलेंस अगर हमारी फॉल नहीं होनी चाहिए, है ना. तो लेग्स मसल्स को हमें, जैसे हैमस्ट्रिंग्स हैं, काम मसल, इनको कैसे हमारे को स्ट्रॉन्ग रखना है, जैसे कहा जाता है ना. Yes ma'am, I'll come to that now. Ma'am, एक single leg weight bearing, this helps a lot with muscular strengthening. Along with that, तो heel raises होते हैं, जिसे हम calf raise भी बोलते हैं. Climb onto a stair or a very small but steady stool, sturdy सा stool लेकर, wherein the heels are off that particular support. हमारा forefoot जो होगा, वो अगर मैं stair की ही बात करूं, that will be onto the stair. We'll take support from the handle or the rails, and the heels would be free. They would not be on the support. Then what we need to do is, we need to raise the heel up, like pulling ourselves upwards. This is for hamstrings. Right? Exactly, ma'am. That is for the hamstrings. And again, it would be in 3 different graded ways, wherein 1, 2 and 3. जितना ज्यादा हम ऊपर तक रेज कर पाएंगे, we'll be raising and we'll be holding it there. So this is a wonderful exercise to strengthen the calf muscles. Along with that, the sit to stand. This helps us in strengthening the quads, the hamstrings and the glutes. इसके लिए what we need to do is, we need to sit at the edge of a sturdy chair with the feet firmly and flat onto the ground, and the feet should be hip width apart. Divya ma'am, you'll have to set your feet a little bit apart. Yeah. Okay? At least hip width apart, we should have the feet. Then again, we can either cross the arms को cross कर लेंगे, या फिर अपने सामने we can extend it also and lean a little bit forward, because that would help in engaging the core. Fine. Now pushing down on the heels, we would try to stand up. Exactly this way. Then while we are going down, it has to be very slow. Even that would engage the core very nicely, and we would strengthen the lower back also. So these are very small exercises. I would try to pen them down and have some figures, and I will send it to you so that we can all have a PDF also for this. रश्मि जी, इसमें एक चीज ऐड करूं मैं. जी मैम, प्लीज. अगर आप जैसे
बैठे पोस्चर से खड़े हो रहे हैं ना, तब समय तक अगर रेस्पिरेशन भी ले लोगे ना साथ में ऐसे, देन इट बिकम्स इजी, एंड हमारी जो चेस्ट मसल्स हैं दे आल्सो वर्क विद इट. Very true, ma'am. Very true. Thank you for this. It definitely अब helps खड़े होकर if देखिए ना, we बिल्कुल improve the थकान भी respiration. नहीं होगी खड़े होने में. So, हाँ जी मैम, बिल्कुल. और हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी साथ साथ इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, wherein inhale to exhale ratio should be 1:2. A graded breath is wonderful. We imagine we are ascending and descending the stairs. So while we are ascending, we can take small breaths in, like, and while we are descending, it can be exhale, small exhale. This helps to maintain a longer breath. So thank you so much, ma'am. It was wonderful, and आपके suggestion ने हमारा breathing भी incorporate करा दिया. Thank you so much. So thank you, Dr. Rashmi. हम लोग सब अब invigorate हो गए हैं for the evening. And happy weekend to you. Happy whatever you are about to do just now. Thank you so much for being with us. Thank you very much. I just want to add one exercise which Dr. Sharda Jan ma'am taught us during COVID. वो बैठ के भी कर सकते हो, खड़े भी कर सकते हो. It is a Japanese exercise. It is called Saiso. And उसमें कुछ भी नहीं करना. अगर आप खड़े हैं तो ऐसे करना है, अपने टोस पे खड़ा हो जाना है, दोनों आर्म्स को रेस करना है और एक लंबा ब्रेथ अंदर लेना है. ऐसे करके टोस पे खड़े हुए लंबा ब्रेथ लिया, फिर ऐसे किया पीछे, मतलब आपका हाथ ऐसे चला गया. सो लंबा ब्रेथ अंदर एंड एक्सेल, लंबा ब्रेथ अंदर और एक्सेल. ये वाली एक्सरसाइज 36 टाइम्स करनी है. बैठ के भी की जा सकती है और खड़े भी की जा सकती Like है. Bhastrika, what we do. Like we do Bhastrika. So Exactly. and it's also मतलब ये भी सर्कुलेशन को खूब बढ़ाता है. तो भस्त्रिका ही कर लेते हैं. तरु आप कराओ, भस्त्रिका कर लेते हैं हम लोग. ऐसे लेकर देन सांस लेके ऊपर जाना है और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आना है. 30 टाइम्स करो सब. 10 टाइम्स तो कर ही लो. So Dr. Chitra Raghunandan is with us. Madam, would you like to share a few words? So it has been a wonderful evening. I joined little late. I'm sorry for the same. I was some preoccupation, but I heard the lecture of the last part of Taru, and of course your frozen section lecture and the exercise. I would have Rashmi. I wish you were not in the car, but doing it in front of us, we could follow that. But the tightrope thing and the weight on this is not usually taught in yoga classes, which I do attend. But that is, I think, a very good exercise. Walking on a tightrope gives you. I think it will give you a little more balance. Only thing that I feel that we have started all this in the twilight years of our life, but for all of you youngsters, even the very young people now who are all the time working on the computer and have a busy life, sitting in the offices and all that. So for them, all this is so very important to start this from the very early. In fact, even children have now started doing Surya Namaskar, and I'm really delighted to observe my grandchildren knowing Surya Namaskar. So all this is, a changing world now. From the very young age onwards, people have started doing it, which we are now doing it at the last quarter of our, maybe in the 6th or 7th quarter of our life, but it is making a difference, definitely. All these are knowledge adding about frozen shoulder and about how to improve our life with connectivity with our friends and all. So many things. And thanks to the senior citizens, Pathshala, I have learned a lot. And I'm learning with every Pathshala, I'm improving my uptake, improving my knowledge. Thanks to all you youngsters, Taru and Divya and Renu and Rashmi, like very young person which whom I am observing. All this has been a very encouraging world for us. Thank you so much. Thank you, ma'am. Over to you, Taru. Thank you so much, everyone. सबकी blessings and सबकी inspiration
हम सबको और आगे अच्छा करने के लिए मोटिवेट करें. Very nice, conducted very well, both of you, Taru, Divya, and all these people who have given the lectures today. Wonderful, and you did the work. You showed in action, so that was understood very well by everybody. Whatever they talk, the pros and shoulder and all, so basic, but everything so clear. Yeah, And very nice. so we very you. often we are not having a proper knowledge about all these things. Those who do not have these, they can really have lots of input taken from all these lectures. Yeah, Thank did you you so want much. to say something? Thank you. Thank Ma'am, you, Charu. actually, Thank you, in Divya. Sudarshan Kriya, Art of Living, which is a Thank you, big Rashmi. event, and they also do this Bhastrika before doing Sudarshan Kriya, and to keep the body at calm, and बिल्कुल अच्छे से वो करते हैं. वो भी 3 Madam- sets करते हैं, 10 each भस्त्रिका ऐसे वाले. Madam, Deepti, you want to I say want to something? say something. जो भत्रिका अपन करते हैं ना, those who are BP patient and heart patient, they should do it slowly. Slowly, Otherwise, yes. हाँ, otherwise it is a forceful respiration and expiration. So we have to do slowly who are BP and heart patients. Yes. And it was very nice and wonderful program. Very much practical, and everybody did their job very nicely and justified. Thank you so much. Yes, Deepti. Divya and Taru for a wonderful job. Deepti, you want to say something? मैम यस मैम बीइंग गायनिकोलॉजिस्ट हम लोगों को नी एंड बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम लोगों की लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाती है और पोजीशन पीवी और डिलीवरीज में कभी कभी अजीब सी पोजीशन हो जाती है तो बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस भी हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट, वेरी करेक्टली सेड. तो हमारी बॉडी को हमें फिट रखना है तो जिस पोस्चर का हमारा ज्यादा यूज है उस पोस्चर का हमको ध्यान रखना होगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. लक्ष्मी मैम, आपको देख के ना शारदा मैम बार बार याद आ रही है मेरे को. थैंक यू सो मच. Thank you everybody. और बिना भूले कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले लेना 50 साल के बाद. सही बात. और सर मैम, सब लोगों ने अपनी न्यूमोकोकल वैक्सीन लगाया है ना? नहीं लगाया. मैम प्लीज, जिससे नहीं लगाया है ना, लगवा लो जरूर से. 60 प्लस पे चाहिए. और TDAP भी. TDAP अगली बार वैक्सीनेशन पे रख लेंगे. हाँ, एल्डरली वैक्सीनेशन आफ्टर 60. कौन सा Vaccination वैक्सीनेशन elderly. Thank you Taru. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you Dr. Shashi, Dr. Yeah. Veena, Dr. Yeah. Dipti, Dr. Rashmi. Bye. Bye, ma'am. Thank you so much.